Okay, great. Next one, 43 सेशन, काफी इजी सेशन है. 44 पे जाएंगे. Synergy, synergize करना. Syn means together, syn energy, same energy है. Like corporate words के अंदर यूज करते हैं. जैसे सपोज करो अगर आपके साथ किसी को मिलना है या मीटिंग करनी है. Hey, I was just checking with you, like since you are in the, मैं बोलता हूँ ऐसे, since you are also in the education business, you're director of a college, I'm also into education. So I would like to meet you that if we got some synergies, okay, if we can synergize something on some mutual work or some kind of partnership. So synergies is a good word, is a starting word for having a partnership. So तुम भी आज के बाद बोल सकते हैं, hey, I wanted to meet you, just wanted to check that whether we have got some synergies. So partnering का ऊपर करते हैं. Amalgamation, you can say that amalgamation is actually a mix. Okay, amalgamation is actually a mix. I'll show you what amalgamation is. Okay, what degrees do you guys have? Are you guys BMS, BCom, BAF? What do you guys right now? What do you guys just type in BMS back engineering, कौन सा engineering type in BMF BAF BAF BMD क्या होता है भाई? BMS BMM engineering BSc CS engineering, कौन सा engineering? BCom BMS okay, gonna give my 12th. Oh, Jay gonna give you 12th, lovely. Okay, IT engineering, BCom in progress, BBA in family. Okay, lovely. Now you know what? You guys are amalgamation of different backgrounds here. Amalgamation means mixed together. Okay, I can also say that बचपन में हम करते थे heterogeneous mix. Heterogeneous mix, spelling देख लेना यार, spelling यहाँ पे change करने बहुत. Heterogeneous, एक होता है homogeneous mix. Homogeneous, yeah, like right now you're all CATKing students. I would say you are actually homogeneous mix because तुम सब CATKing के बच्चे हो. कोई यहाँ पे टाइम IMS का है नहीं, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे टाइम IMS का बच्चा कोई है? आते हैं बीच में छुप छुप के अटेंड करते हैं. ये कई लोग तुम में से दुश्मन इधर उधर पास करते हो. कोई एक्स टाइम IMS है? कोई तो होगा. ओके, एक्स टाइम IMS कोई है? कोई नहीं. Okay, great. I was in IMS before 10. Okay. Amalgamation, yeah. Amalgamation is also a concept in chemistry. Okay, lovely in here. Great. Just a second. Just go through these words. I'll be right back in 30 seconds. Go through these words फटाफट. Okay, so I'm back here again. Great. So amalgamation is a perfect mix. This is the इतना बड़ा example दिया पायल कटारिया. Amalgamation. You guys are an amalgamation of different background, mix of two or many. Akhil. Heterogeneous mixture is also a mixture which is separate mix. ठीक है? आप बोल सकते हो कि you guys are an heterogeneous mix who are amalgamated together at CATKing. Are you with me? You're a heterogeneous mix of people, but you're actually amalgamated. You're mixed together in the same class. ठीक है? समझ गए? But heterogeneous मतलब अलग अलग चीजों को कम. Homogeneous अगर सब तुम CATKing के हो, सबको एक ही टी-शर्ट पहना दी जाए, सब एक ही रंग में हैं, सभी लोग मेरे जैसी बातें कर रहे हैं, then I can say you're a homogeneous mix. ठीक है? Milk versus water के अंदर जब हम मिला देते हैं, it becomes a homogeneous mix. ठीक है? आगे चलते हैं. The next word here is decapitulate. Okay, great. Guys, keep asking. अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, no problem. आज का सेशन थोड़ा डिफिकल्ट है और मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ, आप पूछ सकते हो. Decapitation मैंने आपको समझाया. एक था recap. Okay, one was recap and other was okay negation. या बता रहा हूँ भाई. बता. हाँ, माना तुम लोग देख रहे हो अच्छे से. हाँ, इतने होशियार बनते हैं. मिस negation. Okay, ठीक है. Synergy मैंने बताया हिमांशी. Synergize करना, synergy, same energies together. Okay, bringing it together. Negate करना, negate. Oh, this is also a WhatsApp word, by the way, very casual word. I use it a lot. Like, you cannot negate the idea that Mr. Modi is going to become the prime minister. Okay, you cannot negate the idea कि Mr. Modi तो चलो by default है, Amit Shah can become a prime minister. Yeah, you cannot negate. Negate मतलब निकालना, negation, you know, negative, negation. You cannot negate the idea of Amit Shah becoming the prime minister. Mr. Modi बोल सकते हैं भाई मैं थक गया हूँ, चलो अमित शाह चिल कर, तू enjoy कर. Deny करना, दक्षता is actually मना करना, थोड़ा फर्क है. Negate, deny करना is completely no. Negate करने को थोड़ा दे के छोड़ना. Neglect would be more considered, not considering. ठीक है? You can say rejection भी हो सकता है, but negation का मतलब is negative when you negate. मतलब it was one before and then you take it out, it's called as negation.
Okay, it's called as negation. नहीं जी, negate, you cannot negate the idea. There is a strong possibility you can say that. So negation मतलब इस idea को reject करना, पर वो idea दिमाग में था, is called as negation. Decapitulation हमने कर लिया. Recap was summarizing of the heads together. तो मूवी के पहले recap करते हैं, ठीक है. नेटफ्लिक्स में अगर आप कोई सीरियल देखते हो उसके पहले कभी कभी recap आ जाता है, ठीक है. और decapitulate करना मतलब actually removing the heads को decap करना. Capitulation is also similar. Summary को underline करना, capitulate करना, सारे heads को दोबारा लिखना is also called as summary. Capitulation भी उसको बोलते हैं. Okay, session number 44. Dissemble. Anybody knows the meaning of dissemble? हाँ भाई, किसको पता है dissemble? Anyone knows the meaning of dissemble? Dissemble. Anyone? Quick. Last 3 words हैं आज के session के. 9:50 already हो चुका है. What's the meaning of dissemble? Opposite of dissemble. बहुत बढ़िया. Dismantle करना, to break करना, to D मतलब no. Disassembling of the machines आप करते हैं. Dissemble. और इसका एक और synonym भी मैं चेक कर रहा था अभी. Disguise करना. Okay, the right मतलब is that, but आजकल क्या करते हैं? You can say like for example Deepak Mishra. Deepak Mishra is an honest, sincere person with no dissemble. ध्यान से सुनो. ये डिस्गाइज करना है इसका मतलब जब डिक्शनरी में स्टार्टिंग में आया था, डिसेंबल वाज मोर ऑफ डिफरेंशिएट करना, असेंबली का ऑपोजिट, बट द राइट मतलब, द फर्स्ट मतलब इज नथिंग बट is actually disguise, D-I-S-U, dissemble. So please don't dissemble here. Dissemble करना as a verb भी use कर सकते हो, where you can say that conceal or disguise one's true feeling is also called as dissemble. मैं चेक कर रहा था अभी, इसको also called as dissemble. Pretend करना, deceive करना, opposite of assemble नहीं है, केविन actually opposite usage नहीं करते हैं, पर ये word वैसे आता है, वो disassemble होता है, disassemble करना, ठीक है. Dissemble रट्टा मारना पड़ेगा ये word. Disguise करना, disguise, like this person is she's honest, sincere person with no dissemblance, with no clarity, मतलब with no unclarity, मतलब एक clean है, disguise नहीं है यहाँ पे, ठीक है. No dissemblance, dissemble मतलब disguise, चोर आदमी, ठीक है, कुछ चोरी चारी, कुछ छुपाने वाला आदमी is called as dissemble. Okay, next one is called as levitate. lightedness, levitate. मैंने आपको बताया पुराने जमाने में वो गुरुजी वगैरह levitate बोलते थे, वो धरती से ऐसे ऊपर उड़ने शुरू कर देते थे, because they were very positive in their whole thing. It used to be called as levitation. Sorry. Number 3 is called as oscillation. Oscillation हमने किया, pendulum normally oscillates. Okay, pendulum normally oscillates. Okay, to and fro move करना, बहुत बढ़िया. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from CATKing.